students, I hope you all are fine. In this video, I'll be covering Constructors chapter introduction, that is chapter number 4, and it is the last chapter of the first term computer syllabus. Constructors chapter PDF I have already sent for your convenience so that you can give a thorough reading to this chapter. Let's start with the constructor characteristics and what is constructor. Now first point I have written is constructor is a block similar to method having same name as that of class name. So I have made an example here. So it is class test. The name of the class is test. Now as per the first point that constructor is a block similar to method. So I have made a method here, public void test. In this way we will write the method header line. So it is public void test. So it is having the same name as that of class. Do you think it is a constructor? No. Let's go to the second point, because the second point says it does not have any return type, not even void. So that means while writing the constructor we will not write any return type. That means even void should not be there. So this becomes now public test. I have removed void from here because remember this line that constructor is a block similar to method having same name as that of class, but it does not have any return type, not even void. Constructor हमें कोई चीज़ return नहीं करता है. That is why we will not put any return type in the header line of the constructor. Now the third point is what type of modifiers can be applicable to the constructor. See, the applicables, the only modifiers applicable for the constructors are public, protected, private and default. There are many other there's modifiers in the Java also, like synchronize, that will be covered in advanced Java, but that particular modifiers are not allowed to write in front of constructor. So public, private, protected and default, these are the only modifiers which are applicable for constructor. Then the next point is it executes automatically when the object is created. Now the thing is how we can call this constructor, how we can use this constructor. See, अगर हमारे पास ये मेथड होता तो आप मेथड को कैसे कॉल करते हो? पहले आप टेस्ट और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, देन यू विल यूज टी डॉट ऑपरेटर and test method. But here it is a constructor. So constructor is automatically called when the object is created. See this line, test t, this is the object, is equals to new test. This part is known as constructor. Constructor is called here automatically. It executes automatically when the object creation is there. So we will not write this line to use the constructor. We will if we will call the constructor, this will not be useful. This line will not be the useful part. The constructor is automatically created when the object is created. So these 4 points to be kept in mind, that constructor is a special member method of the class without a return type. It is used for initializing and constructing the data members of the object when it is created. When the object is created, it gives values to the data member of the object. I'll show you with example. It is automatically called when the object is created. It cannot be invoked by user like your normal method. That means no object creation or with dot operator, that method call statement is not needed for the constructor. When the object is created, automatically it calls the constructor. Now again, this question is very frequent in the board exams, that characteristics of constructor. 2-mark question will come. You have to remember these 4 points. A constructor will have the same name as that of class. Same name होगा जैसा class का नाम है. A constructor does not have any return type, not even void. A constructor cannot be static or final. That means only public, private, protected and default will be allowed. A constructor must be declared public. अगर वो उसको यूज़ करना है क्लास के बाहर तो it should be declared as public.
and it automatically called or invoked when the object is created. Now need of a constructor. अब constructor की need क्या है? A constructor is used for initializing and constructing the data members. Look at this example. It is on page number 109. See, in this public class book, class name is book. It has taken 3 variables: book number, book name and price. Now look at the main method. In main method there are 2 objects, b1 and b2. Book is the class name, b1 is the object name, new is the operator. This part is known as constructor. The moment b1 is created, it will go to the constructor. Constructor means this part. Here it is written public book. See, the name of the constructor is as that of same name, book, book, but it is a kind of method, so parenthesis or the round bracket is needed here. It is a constructor having no arguments. We will be covering this in types of constructor, because there are 2 types of constructors. One is default constructor, which is having no arguments, and other one is parameterized constructor, which we'll be covering on the next page. So it is a default constructor having public, and the constructor name is as that of class, that is book. So it is having parenthesis, and inside the body of the constructor it is initializing all that members. See, these are the instant variables. Instance variables means ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स. जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करना 3 थिंग्स से पॉसिबल है, इधर बाय मेथड्स और बाय रेफरेंस वेरिएबल्स और बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स. रेफरेंस वेरिएबल्स में आपने 9th में सीखा, जैसे हम इसके आगे इक्वल टू डाल के वैल्यूज़ दे देते हैं. अगर स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमास में, इंट है तो उसकी कोई भी वैल्यू दे दी, प्राइस है तो फ्लोट है तो उसका कोई भी डेसिमल नेम दे दिया. सो दीज काइंड आर थिंग एज रेफरेंस वेरिएबल्स. अगर हम मेथड्स के अंदर यूज़ करते हैं बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, वो हमें नॉन स्टैटिक या स्टैटिक मेथड्स में वी हैव कवर्ड इन 9th. नाउ द थर्ड थिंग इज कंस्ट्रक्टर्स. कंस्ट्रक्टर्स का नीड है डेटा मेंबर्स, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराना, उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना. नाउ लुक एट दिस पार्ट. अगर ये कंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं होता, सो न्यू बुक b1 क्रिएट हुआ, बुक क्लास का ऑब्जेक्ट. जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इट विल सर्च फॉर सम वैल्यूज़, और हमने यहाँ इसको कोई वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देगा. b1 ऑब्जेक्ट के इन डेटा मेंबर्स को बुक नंबर इज़ ऑफ इंट टाइप, तो इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल, एंड फ्लोट की वैल्यू होती है 0.0f. तो जैसे ही बुक b1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये इनको ये कंपाइलर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देगा, और द मोमेंट b2 क्रिएट होगा और कंपाइलर b2 को भी ये सेम वैल्यूज़ दे देगा, क्योंकि b2 में भी यही वेरिएबल्स हैं, इसलिए b2 को भी ये सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी. ऑब्जेक्ट्स क्लासेस के हैं, क्लास का नाम है बुक. क्लास हमारी एक्ट करती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. दैट मीन्स यूज़र ने ये जो डिफाइन की हैं 3 डेटा टाइप्स, इनकी तरह से ये एक्ट करेगी, इन सबको रिप्रेजेंट करती है. दैट इज़ वाई मैक्सिमम इन तीनों को वैल्यू मिल सकती है कंपाइलर के थ्रू. अगर हम वैल्यूज़ नहीं प्रोवाइड करते तो कंपाइलर कोई ना कोई वैल्यूज़ को प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता तो कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप बना लेता है, और वो उन ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता है जो उसके सिस्टम में सेट हैं, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. इट मीन्स b1 को भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी और b2 को भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी. बट दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि b1 की भी सेम वैल्यूज़, b2 की भी सेम वैल्यूज़, अगर कोई और ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो उनको भी ये सेम वैल्यूज़ मिल जाएंगी. सो दीज थिंग्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो हम चाहते हैं कि जैसे ही b1 क्रिएट हो उसको कुछ वैल्यूज़ मिले जो यूज़र चाहता है, और b2 जो वैल्यूज़ जैसे क्रिएट होगा तो b2 को वैल्यूज़ मिले. तो द मोमेंट जैसे ही b1 यहाँ क्रिएट होगा, हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है पब्लिक बुक,
दैट इज ऑल्सो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब क्या होगा, जैसे ही B1 क्रिएट होगा ये हमारे कंस्ट्रक्टर को सर्च करेगा और बुक नंबर को 0 दे देगा, बुक नेम हमने रख दिया ABC और प्राइस हमने रख दिया 0.0। ये बुक में जो एग्जाम्पल दिया है इसमें इन्होंने 0 और 0.f ली है। You can take any values. Suppose I am taking book number 1 and book price 1.35 or f, right, 1.3f. So you can take any values in the constructor. Constructor सिर्फ हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम करता है। इनिशियलाइज मतलब एक स्टार्टिंग वैल्यू। अगर कोई और वैल्यू, सपोज बुक नंबर है लाइब्रेरी में 334, इफ़ यू वांट टू गिव दैट वैल्यू यू कैन गिव एनी वैल्यू, राइट। बुक नेम है कोई मैथ्स की बुक या कंप्यूटर की बुक, कोडो एप्लीकेशंस, एंड देन प्राइस इज 435, so you can give the 435.0 as price to the book price. You can take any value in your program for the constructor, right? So when the B2 will be initialized, again it will search for the constructor and it will provide the values to the B2. Now see these two statements, SOP ln details of object B1 and these things are B1 dot display details. Display details is a non-static method जिसमें हमारे पास book number, book name और price का SOP means printouts हमारे पास स्क्रीन पे हो जाएंगे, राइट। देन SOP ln details of object B2, B2 dot display details, again it will be method calling statement of non-static method. So B2 will again call the display details and it will show it on the screen. Now I am explaining this program which is on page number 110. Look at carefully because all the things which I have done in last 2-3 minutes, this will be explained again. Now see, class name is book. The variable, instance variables mean object variable है 3, book number, book name, price. int है book number के लिए, string है book name के लिए, float है price के लिए. Now look at the main method. मेन मेथड में हमारे पास बुक क्लास का OB1 ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, क्रिएट हो रहा है. OB1 इज द बुक ऑब्जेक्ट, देन न्यू बुक, हियर इट इज कॉलिंग कंस्ट्रक्टर. दिस पार्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर. जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इट विल सर्च फॉर द कंस्ट्रक्टर. अगर हमने अपनी क्लास में बनाया होगा तो इट विल गिव दैट वैल्यू, अदरवाइज ये अपने आप डिफॉल्ट बना देगा कंस्ट्रक्टर. नाउ इन दिस प्रोग्राम दे हैव मेड ऑलरेडी. नाउ इट विल गो टू this constructor. So it will go to this constructor and these value will be given to those variables for object OB1. Now look at the terminal window, it is showing us. I am again going to main method. सबसे पहले statement है object creation line. एक object create हुआ, उसके बाद statement है in book class. But see in book class यहाँ पे ये print नहीं हुई. सबसे पहले लाइन हुई है constructor called, कंस्ट्रक्टर कॉल टू. लेट्स सी कैसे हुई. जैसे ही OB1 क्रिएट हुआ इट विल गो टू कंस्ट्रक्टर. सी द कंस्ट्रक्टर पार्ट, सी द कंस्ट्रक्टर लाइन. नाउ दिस मीन्स सबसे पहले स्टेटमेंट ये प्रिंट हुई है कंस्ट्रक्टर कॉल टू, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसने कंस्ट्रक्टर को सर्च किया और उसने कंस्ट्रक्टर के अंदर बॉडी जो थी उसको एग्जीक्यूट किया. उस बॉडी में लिखा था कंस्ट्रक्टर कॉल टू, इसलिए स्टेटमेंट प्रिंट हो गई कंस्ट्रक्टर कॉल टू. और ये तीनों वैल्यूज़ OB1 को होल्ड करवा दी गई. OB1 के पास ये तीनों वैल्यूज़ हैं. नाउ इट विल गो टू बैक टू मेन मेथड, क्योंकि यहाँ तक कंस्ट्रक्टर की बॉडी फिनिश हो गई एंड इट विल गो टू मेन मेथड. नाउ अगेन द प्रिंटिंग स्टेटमेंट इज इन बुक क्लास. लुक हियर, इन बुक क्लास. उसके बाद OB1 ने कॉल किया नॉन स्टैटिक मेथड को. नॉन स्टैटिक मेथड इज डिस्प्ले डिटेल्स. अब नॉन स्टैटिक मेथड्स को हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं. तो OB1 की हेल्प से डॉट ऑपरेटर लगा के हमने डिस्प्ले डिटेल्स मेथड को कॉल किया. तो डिस्प्ले डिटेल्स की बॉडी में गया, इन सबको उसने रन किया. बुक नंबर कितना मिला था OB1 को? 0. बुक नेम कितना था? ABC. बुक प्राइस कितना था? 0.0f. लुक हियर द टर्मिनल विंडो इज शोइंग यू. बुक नंबर इज 0, बुक नेम इज ABC, बुक प्राइस इज 0.0f. नाउ इट विल गो बैक टू मेन मेथड अगेन another object is being created here. So object 2 create हुआ.
जैसे ही ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा, सी दिस लाइन, ये फिर से कंस्ट्रक्टर में गया. दैट मीन्स अगेन इट विल सर्च फॉर कंस्ट्रक्टर, इट विल रन दिस कंस्ट्रक्टर. अगर कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट है तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज सिर्फ वैल्यूज दे दी जाएंगी. राइट नाउ अगेन द डिस्प्ले स्टेटमेंट वॉज देयर, सो इट इज हेयर कंस्ट्रक्टर कॉल टू. देन अगेन वैल्यूज उसको होल्ड करवा देगी OB2 को, एंड इट विल गो टू मेन मेथड. मेन मेथड में क्या लिखा था, इन बुक डेमो क्लास. अगेन इट इज शोइंग इन बुक डेमो क्लास, और फिर से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल किया गया, नॉन स्टैटिक मेथड की डिटेल्स को प्रिंट करवा दिया गया. That is 0, ABC and 0. So in this way constructor help us to initialize values to the object. So remember these things, constructor is a block having same name as that of class, similar to method, but it is a special kind of method which is having no return type. So it is having only public here, and the name of the constructor is same as that of class name. So it is used to initialize the data members of the object, and it does not have any return type, not even void. The only modifiers applicable for constructors are public, protected, private and default. So, and how it executes, it executes automatically when the object is created. So in next video I'll be covering the types of constructor and more programs with the constructor explanation. Thank you.